Hello students, welcome to my channel Maths with Panu. Today I am discussing you with some value based questions. For example, we have a question: if there are two numbers 10 and 24 and their HCF is 2, find LCM. In my previous video, we discussed HCF and LCM. Now we take an example. We use the identity, that is first number multiply second number is equal to HCF multiply LCM. I repeat, we have two numbers 10 and 24 and we have their HCF also and we have to find LCM. To find the LCM, we use this identity. First number is 10 and second number is 24 and HCF is 2. Highest common factor and we have to find LCM. Now, to find LCM, divide the fraction by 2. हमें इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में एज अ डिनोमिनेटर लेके जाना है और कटिंग कर देनी है. जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और फिर 5 और 24 को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 120. Okay, now we move on some questions of linear and quadratic equations. For example, you can see here there is a question: find the zeros of x plus 5, 2x plus 3 and x minus 4. What is linear equation? Linear equation is an equation in which the variable, the power of the variable is 1, means we have a single variable like x. You can say y, t, u. So linear equation is an equation in which we have only single variable and the power of this variable is 1. You can see here some definitions before starting our topic. What are linear equations? You can see here linear equation is that equation in which variable 1 means power of the variable is also 1. You can see here the example like x plus 13, 5y plus 6, 6t plus 8 or 5u plus 4, anything. But you can see here variable is single in all the terms. Now, what is quadratic equation? Quadratic equation में variable होता है 2. Means power of the variable. Like you have x square. Then quadratic equation depend on this power because we have the power 2. You can see this one. And in the previous question we have the power 1. And in this question we have the power 2. First of all x to the power 2 and then x to the power 1. X to the power 1 and this constant term is not necessarily, but x to the power 2 indicate that this equation is a quadratic equation. You can see here any other example, x square plus 2. X square plus 2 is called pure quadratic equation. Why? Because in this equation we have not the variable x.
We have only x square and 2. Now, what is cubic equation? In which the power of the variable is 3. And you can see that x cube, 4x square, you take any example, x cube, then x square and x to the power 1, and we get a constant term. Means highest coefficient, highest power of the variable is 3, not coefficient, power of the variable. What is biquadratic equation? In this equation, the maximum power is 4. X to the power 4, x to the power 3, x to the power 2, 1 and so on. And all these equations are come in the section of polynomials. I repeat my concept. What is linear equation? In which power of the variable होती है 1. Quadratic equation में power of the variable 2. And cubic equation में power of the variable is 3. And biquadratic equation में power of the variable is 4. Now we move on our value based questions, objective type questions. You can say that multiple choice. So let's see here our first question, that is find the zeros of x plus 5, 2x plus 3 and so on. So first of all क्या करना है, अगर हमें zeros find करनी है, what are zeros? What is the meaning of zero? Zero means root of the equation, value of the variable x. जब हमें कहा गया है कि zeros find करो, इसका मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, पुट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0. सबसे पहले इस इक्वेशन को 0 के बराबर रख दीजिए एंड टेक दिस कांस्टेंट टू द राइट साइड. एंड वी ऑल नो दैट कि व्हेन वी टेक सम कोएफिशिएंट ऑन द राइट साइड देन वी चेंज इट्स साइंस. अगर ये प्लस की टर्म है तो उधर जाकर किसकी होगी, माइनस की. सो यू कैन राइट हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 0 लिखना है, जो टर्म राइट साइड पर है पहले उसे लिखिए एंड फिर जो टर्म उधर लेके जानी है उसे लिखिए. तो ये आ गया 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5. -5 इज आवर रिक्वायर्ड 0. इसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द लीनियर इक्वेशन. नाउ वी मूव ऑन आवर सेकेंड पार्ट. If we put 2x plus 3 is equal to 0, then in the same way we take 3 on the right side. Now we need not to write 0 here because 0 does not affect our value. And 3 को उधर ले जाइए, साइन आएगा माइनस का बिकॉज 3 यहाँ प्लस का है और 2 जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो -3/2 हमारी 0 है. नाउ on the next part we put x minus 4 is equal to 0 और 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन है और उधर जाके किसका बनेगा, प्लस का. तो हमारे पास आ गया x is equal to 4 which is our required 0. 0 means value of x, remember that. Now we move on our next question. If we have to check -6 -3/2 आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन. पिछले क्वेश्चन में उसने हमें कहा था फाइंड द जीरोस और हमें इक्वेशंस गिवन थी, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चेक करिए -6 और -3/2 इनकी जीरोज हैं या नहीं. इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है -6 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्लेस ऑफ x. यू पुट -6 in the place of x in your question. So you can see here when we put -6 in the place of x, 6
इज ऑफ माइनस साइन एंड अदर वन प्लस साइन, तो कैंसिल कर दीजिए और यू गेट योर आंसर 0. मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो x is equal to minus 6 is the 0 of x plus 6. Now we can check the other term also, and we have minus 3 by 2. When we put this value in the place of x by cancelling 2, we get minus 3 plus 3, and after cancelling it you get 0 is equal to 0. So it is also verified. So you can write here, yes, x is equal to minus 3 by 2 is the 0 of the given linear equation. Now, if we have a quadratic equation in place of linear equation, अगर हमारे पास एक quadratic equation है तो हम उसे कैसे solve करेंगे? So we have many methods, mainly 2 or 3, and first method हमारा है by factorization method. सो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को. इसके लिए जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ लगाइए 1 अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है. फिर आपको दो चीज़ें देखनी हैं कि सम होनी चाहिए 4. आपको ऐसे दो डिजिट्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए, बिकॉज इसमें हमने फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? लास्ट टर्म से. 1 फर्स्ट टर्म है और 4 लास्ट टर्म है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. अब आपका काम है दो टर्म्स फाइंड करना कि उनको ऐड करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए. लकीली वी हैव द सेम टर्म. सो हमें कैसे फाइंड करना होगा? सो यू कैन सी हेयर, यू कैन फैक्टराइज योर प्रोडक्ट. जो वैल्यू p की आई है, p की वैल्यू आपके पास है 4. अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं ऐसे. 4 के फैक्टर बनाइए, लाइक 2 2s are 4, 2 1s are 2, एंड हमारे पास यहाँ दो फैक्टर आ गए, लाइक 2 and 2. जब हम इन फैक्टर्स को प्लस करेंगे 2 + 2, देन यू गेट 4, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या गेट करेंगे? 4, बिकॉज आपकी जो सम की प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाइड हो रही है और जो प्रोडक्ट की है वो भी सेटिस्फाई हो रही है. तो आपने क्या करना है, जो मिडल टर्म थी ना यहाँ पर 4x, ओनली उसे ब्रेक करना है, स्प्लिट द मिडल टर्म. मेथड का नाम ही यही है, स्प्लिट द मिडल टर्म. मिडल टर्म है 4, तो आपने उसे स्प्लिट कर दिया. स्प्लिट मतलब ब्रेक कर दिया. जो 4 है उसके दो पार्ट्स बना दिए, 2 + 2. आफ्टर दैट आपने एक्स स्क्वायर को ब्रेक करना है. एक्स स्क्वायर इज x × x, और यहाँ पे 4 के भी फैक्टर बना लीजिए, 2 × 2. आफ्टर दैट क्या करना है, दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए. इन द फर्स्ट पार्ट हमेशा x ही कॉमन लेना है. तो क्या बच गया हमारे पास? x + 2, बिकॉज x बाहर आ गया है ब्रैकेट से. और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 and 2 कॉमन ले लीजिए. यहाँ से मेनली कांस्टेंट हम क्या कॉमन लेनी है सेकेंड पार्ट से, और अंदर क्या बच गया? x + 2. नाउ यू कैन सी हेयर कि x + 2 की जो टर्म है वो कॉमन है, मतलब ये टर्म कॉमन होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन में. तो आपने क्या करना है, x + 2 को कॉमन ले लीजिए, और जो रिमेनिंग टर्म होगी x + 2 उसे भी इकट्ठा करके लिख लेना है. आफ्टर दैट उन दोनों टर्म्स को 0 के बराबर पुट कर दीजिए. +2 जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो हो गया -2, एंड इन द सेम वे वी गेट द सेम वैल्यू. So -2 and -2 are the zeros of the given quadratic equation. Now, if we have a objective type question, mostly exam में very short questions में ये पूछते हैं कि check or verify, like we have a question -2 or -3 are the zeros of this quadratic equation.
To solve this, we put this value in our equation. We put the value of x is equal to minus 2 in our quadratic equation and you put it in the place of x. x square है ना, तो x की जगह आपने क्या लिखना है -2 और यहाँ पर भी x की जगह क्या लिखना है -2. माइनस का जो स्केयर है प्लस होता है बिकॉज माइनस माइनस प्लस and plus minus minus 4 2s are 8, 4 plus 4 8 and 8 minus 8 is equal to 0. So we have our left hand side and right hand side are equal. Now if we are check minus 3, then we write here minus 3 in the place of x. You can see here we put the value of minus 3 in the place of x and you solve it in the same way. Minus 3 to the square we get 9 and 4 3s are 12 plus minus minus and 9 plus 4 को plus कर दीजिए 13, 13 minus 12 1 because 1 not equal to 0 है मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो x is equal to -3 is not the zero of the quadratic equation. So students, this is an easy way to check our equations and we will discuss the other method in my next videos. Thank you.